Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Muhammad Ali Khalid. I'm a graduate of Rawalpindi Medical College and currently I'm working as a postgraduate president in the ophthalmology department of Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. I welcome you all to this online session organized by MedExam expert and StudyMate on the topic of cornea. अच्छा जी, तो टॉपिक को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एफसीपीएस पार्ट 1 ऑफ्थल्मोलॉजी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होता है। एग्जाम के बेसिकली दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द जनरल सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़ने होते हैं, whereas जो पेपर 2 होता है दैट इज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द ऑफ्थल्मोलॉजी। अब जो सीपीएसपी का सिलेबस है उसके अंदर कहीं पर भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि पेपर 2 के अंदर कितने क्वेश्चंस ऑफ्थल्मोलॉजी वाले सेक्शन से होंगे और कितने क्वेश्चंस जनरल सब्जेक्ट से होंगे। तो देयर हैव बीन पेपर्स इन द पास्ट जिसके अंदर 100 में से 40 to 50 क्वेश्चन सिर्फ ऑफ्थल्मोलॉजी से थे, बाकी जनरल सब्जेक्ट से थे। और ऐसे भी कुछ पेपर्स आए हैं जिसमें अप टू 80 to 85 questions were there from the ophthalmology section और बाकी जो रिमाइंडर थे वो जनरल सब्जेक्ट से थे। तो ये सीपीएसपी ने कोई किसी किस्म का खास रेशियो डिफाइन नहीं किया हुआ। अब जो ऑफ्थल्मोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, वो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं इनटू 5 मेजर सेक्शंस, जिसमें आ जाती है ऑक्यूलर फिजियोलॉजी, ऑक्यूलर पैथोलॉजी, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, ऑक्यूलर एनाटॉमी एंड ऑक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी। ये 5 वो सब सेक्शंस हैं जिसके अंदर से ऑफ्थल्मोलॉजी के क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चंक जो होता है नॉर्मली वो एनाटॉमी से होता है, व्हिच इज द ऑक्यूलर एनाटॉमी। और उसके लिए वी हैव टू स्टडी अ स्पेसिफिक बुक व्हिच इज स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी। ये जो एनाटॉमी है जो हमने एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए पढ़नी है, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड है। ये हमने अपने एमबीबीएस के टाइम में इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी होती। तो ये जो ऑफ्थल्मोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि उनको बाकी जनरल सब्जेक्ट्स के साथ एक एडिशनल चीज भी करनी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉर्निया एंड स्पेसिफिकली आई विल बी फोकसिंग ऑन द एनाटॉमी सेक्शन ऑफ द कॉर्निया, जो कि हमें आनी चाहिए फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 ऑफ्थल्मोलॉजी एग्जाम। सो नाउ लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द जनरल कंसिडरेशंस ऑफ द कॉर्निया, व्हिच इज द दिस पार्ट ऑफ द आई। The cornea forms anterior 1/6 of the eyeball, which is the outermost layer through which the light passes, as you can see over here. It measures 10.6 millimeters or 11 millimeters vertically and 11.7 millimeters or 12 millimeters horizontally. अब यही वो डेप्थ्स हैं और यही वो स्टैट्स हैं कि हमने याद करने हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास पेपर्स के अंदर। इफ यू हैव अ लुक एट देम तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने ये लेक्चर सुनते साथ ये ट्राई करनी है कि इस तरह के जितने भी स्टार्ट्स हैं या तो वो आप अपने पास लिख लें ताकि आपके लिए बाद में रिवाइज करना आसान हो। और दूसरा आपने ये कोशिश करना है, जो मैंने अपने लेक्चर में भी ट्राई किया है, कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप साथ साथ समझते जाएं और साथ साथ रिटेन करते जाएं। तो सिर्फ अगर आप अटेंटिवली इस लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाय द एंड। सो कमिंग बैक, इट मेजर्स 10.6 millimeters vertically and 11.7 millimeters horizontally. The cornea is thinnest at the centers at around 0.5 to 0.6 millimeters. ये इसकी central thickness होती है on average. And it is thicker at the periphery around 0.7 millimeters. The radius of curvature of the anterior surface is 7.7 millimeters, whereas the radius of curvature of the posterior surface is 6.9 millimeters. अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ बिट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ये आई कि जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शुड रिमेंबर द स्टार्ट। आपको ये वैल्यू अगर याद हो जाए तो दैट वुड बी एनफ।
The cornea is frequently more curved in the vertical than in the horizontal plane. You can simply remember it with this mnemonic CV, curved in the vertical plane. It is the main structure responsible for the refraction of light entering the eye. This is a very important point. ये मैं भी explain करूंगा आगे. The refractive index of the cornea is 1.37. Another high yield point. The anterior surface of the cornea is the maximum contributor to the refractive power of the eye. And जो इसकी contribution होती है, that is around 43 diopters out of the total 59 diopters. ये आपने याद रखना है कि जब लाइट हमारी आई में एंटर हो रही होती है तो उसने फोकस होना होता है ऑन टू द रेटिना. तो उसमें जो फोकसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज या फिर जो स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है इन द फोकसिंग ऑफ द लाइट, दैट इज द कॉर्निया, नॉट द लेंस. So you have to remember कि जो इसकी contributing power है, that is around 43 diopters out of the total 59 diopters. Okay. Now after the general considerations, we'll come to the detailed structure of the cornea. The cornea consists of 5 layers microscopically. Number 1, the epithelium. साथ साथ इस डायग्राम को देखते जाएं, आपको ये विजुअल मेमोराइजेशन जो है वो आपकी एक विजुअल मेमोरी आपकी बन जाएगी और आपको फिर आसानी होगी रिटेन करने में. सबसे पहले we have the epithelium, then we have this thin Bowman's layer, then we have the thick layer which is the stroma, then the descending membrane, and finally the endothelium. अब हम बारी बारी इन सब स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. Okay, so coming to the layer number 1, which is the epithelium. The epithelium consists of 5 layers. As you can see, ये एक multi-layered structure है. Okay, so it consists of 5 layers. The superficial cells are non-keratinized stratified squamous cells, these ones over here, whereas the deepest cells are the columnar cells, जैसा कि इस picture में भी आपको नजर आ रहा है. At the corneoscleral junction, which is this region over here, which is the limbus, the epithelium becomes more thicker and may contain more than 10 or more layers of cells. ये हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी कहा था कि कॉर्निया जो है वो पेरिफेरी पे थिकर होती है एज कंपेयर टू द सेंटर. सो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स इट कि पेरिफेरी पे आते आते ये लेयर्स जो है एपिथेलियम की ये भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं. Greater part of the epithelium is devoid of immunocompetent dendritic cells called the Langerhans cells. These cells may be present at the periphery only. तो पेरिफेरी का हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि कॉर्नियल पेरिफेरी पर लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, whereas जो सेंट्रल एरिया है वहां पर रिप्रेजेंट अमूमन नहीं होते. The electron microscopy shows that the superficial most cells of the epithelium have microvilli that project into the tears. और इसका फंक्शन क्या है? They assist in retaining the tear film. This is the cornea, और इसी के आगे वाले हिस्से के ऊपर we have the tear film. एपिथेलियम की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहां पे माइक्रोविलाई होते हैं और उनका फंक्शन ये होता है कि वो उस टीयर फिल्म को एडहेयर करके रखें ताकि आई की ड्राइनेस जो है वो ज्यादा ना डेवलप हो सके. Hemidesmosomes attach the deepest columnar cell layer to the basement membrane of the epithelium. This is a very important point. इस तरह की attachments और इस तरह के जो structures हैं कि कौन सा सेल किस तरह से दूसरे सेल के साथ अटैच होता है, कौन सा सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कैसे अटैच होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली FCPS में पूछे जाते हैं. So you have to remember that hemidesmosomes are responsible for the attachment of the deepest columnar cell layer to the basement membrane of the epithelium. The basement membrane of the corneal epithelium is tightly attached to the layer 2, that is the Bowman's membrane. This is very important. You have to remember that the basement membrane of the epithelium is a separate layer, लेकिन उसको हम अलग से layer consider नहीं करते cornea की, ठीक है? It is a separate entity and the basement membrane is further tightly attached to the Bowman's membrane, ठीक है? That is the layer number 2. This is an important point क्योंकि आगे डेसिमस मेम्ब्रेन में भी एक पॉइंट आता है important, तो उसकी एक distinguishing feature होती है ये. You have to remember this. Complete turnover of the epithelial cells occurs in 7 days. Now, what is the palisades of what? At the limbus, periphery का एक और important point आ गया. The epithelium is thrown into radial folds
This is the area where the new cells are formed by mitotic division and move from the periphery towards the center. This region is called the palisades of Watt. यहाँ पर we have the stem cells और इस जगह से जो नई epithelial cells होते हैं वो generate होते हैं and they move from the periphery towards the center. तो इस जगह पर जो epithelial folds जो epithelium की जो layer है वो folds में through हुई भी होती है and this region over here is known as the palisades of Watt. So another important point regarding the periphery. Okay, coming to the layer number 2, which is the Bowman's layer. The Bowman's layer lies immediately beneath the basement membrane of the corneal epithelium, as I stressed earlier. The thickness of the Bowman's layer is around 8 to 12 microns. And the most important point that you have to remember regarding the Bowman's layer is that it cannot regenerate. When the Bowman's layer gets damaged, it is replaced by fibrous tissue. This layer does not have the capacity to regenerate. This is the most important point जो आपने Bowman's layer के बारे में याद रखनी है. Coming to the third layer, which is the stroma or the substantia propria. The stroma consists of the 90% of the corneal thickness and it mainly consists of type 1 collagen. ये एक important point है. Collagen की types भी different structures के अंदर frequently पूछी जाती हैं. So you have to remember that stroma consists of type 1 collagen. Collagen fibrils are embedded in glycose aminoglycans. Lying in between the lamellae are the flattened fibroblasts. Occasionally, macrophages, lymphocytes, and polymorphonuclear leukocytes are also seen. The corneal transparency is due to the lattice arrangement of the collagen fibrils. This is very important. This is a very high yield point. अब हम ये देख लेते हैं कि corneal transparency क्या है और lattice arrangement क्या है. देखें, ये एक normal cornea है जिसके अंदर ये collagen fibrils हैं और ये एक specialized arrangement के अंदर पड़े हुए हैं. This specific arrangement over here that you can see is the lattice arrangement of the collagen fibrils. Cornea को ट्रांसपेरेंट होना होता है in order to allow for the light to pass in the eye. ठीक है, अगर कॉर्निया ओपेक होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली लाइट क्रॉस नहीं करेगी और पेशेंट का विजन तो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना वो ये होता है कि ये कोलेजन फिब्रिल्स अपनी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर पड़े हों. जब भी कभी ऐसा होगा कि कॉर्निया हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, कॉर्निया के अंदर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लैटिस अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी. जब भी ये लैटिस अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी एंड कॉर्निया will turn translucent and then eventually opaque. ठीक है, so this lattice arrangement is extremely important for corneal transparency. Coming to the layer number 4, which is the Descemet's membrane, this thin layer over here. The Descemet's membrane lies posterior to the substantia propria and is the basement membrane of the endothelium. A very important point. मैंने ये कहा था कि epithelium की basement membrane अलग है and the basement membrane is attached to the Bowman's layer, whereas the Descemet's membrane is the basement membrane of the endothelium. ठीक है, तो ये differentiating feature आपने याद रखना है. The Descemet's membrane consists of type 4 collagen. Stroma में we had type 1 और Descemet's में we have type 4. Hassel-Henle bodies. अब ये क्या चीजें होती हैं? At the periphery of the cornea, there are small protrusions from the membrane extending into the anterior chamber. These are called the Hassel-Henle bodies. They increase with age and they are considered as a normal aging phenomenon. Descemet's membrane से कुछ folds हैं और कुछ protrusions हैं जो कि निकलती हैं and they extend into the anterior chamber. This region over here, this is the anterior chamber. ये जो protrusions हैं ये with age increase करती हैं and they are considered normal aging phenomena. So these are the Hassel-Henle bodies. तो Hassel-Henle bodies ये वाली हैं और जो palisades of Watt थे वो हमारे epithelial cells की जो periphery होती है यहाँ पर they are thrown into folds जहाँ से mitotic division होके नए epithelial cells generate होते हैं.
Those were the palisades of what? And this over here is the Hasselin bodies. At the inner margin of the cornea, this membrane terminates abruptly and becomes continuous with the trabecular tissue on the inner wall of the canal of Schlemm. This abrupt termination or anterior border ring of the trabecular meshwork is called the Schwalbe's line. इसको समझने के लिए we have to go to this slide. Now this is a beautiful diagram. ये बहुत fit diagram है. इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत elaborate होकर समझ आती हैं और अगर आप इस diagram को साथ लेकर चलें अपने structures को पढ़ते हुए तो आपके लिए चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएंगी. अब आप यहाँ पे देखें. This is the cornea और जो ये bluish membrane हमें नजर आ रही है ना, this over here is the decimus membrane and you can see over here this membrane terminates abruptly over here. इस जगह पर जहां पर ये membrane terminate हो रही है ना, यहाँ पर एक line create होती है और ये interiorly create होती है, बाहर की तरफ नजर नहीं आती. यहाँ पर जो line बन रही है ना, this line is known as the Schwalbe's line. ठीक है? तो coming back, the abrupt termination of the anterior bordering of the trabecular meshwork is known as the Schwalbe's line. So you have to remember जहाँ पर decimus abruptly terminate करती है, वहाँ पर एक Schwalbe's line बन जाती है. Then the next important point, the decimus membrane can regenerate. When damaged, it is regenerated by the endothelial cells. Bowman's layer regenerate नहीं करती, decimus membrane regenerate कर जाती है और इसको जो regenerate करने वाला structure है, that is the endothelial cells. Coming to the layer number 5, which is the endothelium. Single layer of flattened cells that are polygonal in shape. The endothelium is continuous with the endothelial cells that line the spaces of the iridocorneal angle and the anterior aspect of the iris. Function of the endothelium: to maintain the normal hydration of the cornea by barrier function, by limiting the access of water from the aqueous humor to the cornea, and by active transport mechanism, which is the endothelial pump. तो endothelium का क्या काम होता है कि एक तो ये as a barrier act करता है, क्योंकि देखिए this is the layer over here ना, it is directly in contact with the aqueous humor. ये एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है कि एक्वस कॉर्निया के अंदर ना जाए, उसको हाइड्रेट ना करे. सेकेंडली इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि एंडोथेलियल पंप के तौर पे एक्ट करती है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए जो कॉर्निया के अंदर अगर कोई फ्लूइड मौजूद होता है तो उसको ये पंप आउट करके इट थ्रोज इट इनटू द एंटीरियर चेंबर. So this is the important function that you have to remember regarding the endothelium. The endothelium has 5,000 cells per millimeter square at birth, 3,000 at 40 years of age, and less than 500 cause corneal edema. जैसे जैसे एंडोथेलियल सेल काउंट कम होता जाएगा उतने ही चांसेस हैं कि बैरियर फंक्शन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इफेक्ट होता जाए और अल्टीमेटली द कॉर्निया विल बिकम हाइड्रेटेड. सो अगर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 500 पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाए तो इवेंचुअली क्या होगा, कॉर्निया के अंदर एडिमा होना शुरू हो जाएगा और कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी. Now coming to the blood supply and lymphatics of the cornea. The cornea is devoid of lymphatics and blood supply. A very important point. At the periphery of the cornea, there lies a network of capillary blood vessels originating from the anterior ciliary arteries. The cornea is nourished from diffusion from aqueous humor and from these capillaries at its edge. The cornea receives oxygen at the center directly from the atmosphere dissolved in the tear film and peripherally by diffusion from the capillaries of the anterior ciliary arteries. This is very important कि cornea के लिए जो oxygen की supply होती है that is mainly directly from the atmosphere dissolved in the tear film. So this is always the best option if you have this. Excuse me. Now coming to the nerve supply. The cornea is supplied with the long ciliary nerves. आपको ये पूरा pathway याद होना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी nerve जो है वो options में mention हो सकती है. Long ciliary nerve, which is the branch of the nasociliary nerve, which is the branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. The axons of these nerves in the cornea are naked. They are unmyelinated and devoid of Schwann cells. And these axons are sensitive to pain and cold. So these are the two sensations जिससे cornea sensitive होती है, which is the pain and cold.
Certain other high yield points regarding the cornea. The central optical zone. This is the central region of the cornea, 3 to 4 millimeters in diameter. It overlies the pupil of the eye and it is responsible for formation of image on the foveal part of the retina. The quite explanatory. Central zone जो कि pupil को overlie कर रहा है, that is the central optical zone. Arcus senilis. These are white arcs superiorly and inferiorly, almost always separated from the limbus by an interval of 1 millimeter. And they occur because of infiltration of lipid, which is the normal aging mechanism. What is diffuse dystrophy? It is a disease in which the endothelium layer of the cornea dies off. तो क्या हमने जैसे डिस्कस किया था, जब एंडोथेलियम नहीं होगी, एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म और बैरियर मैकेनिज्म इफेक्ट होगा एंड इवेंचुअली क्या होगा, एक्वस ह्यूमर जो है वो क्रीप इन करेगा इन द कॉर्निया, फ्लूइड बिल्डअप होगा और विजन जो है दैट विल बिकम हेजी व्हेन द कॉर्निया विल बी हेजी. So this is a disease in which the endothelium layer of the cornea dies off. Okay, so now coming to the important past paper MCQs that have been coming. अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. The corneal reflex afferent is the ophthalmic branch of the trigeminal nerve. सर मैंने आपको बताया हमें सारा पाथवे याद होना चाहिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है. The sensory nerve supply of the cornea is the nasociliary nerve, which is the branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. The corneal epithelium lies on the Bowman's membrane, which is the layer number 2. The Bowman's membrane cannot regenerate. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Bowman's regenerate नहीं करती, whereas Descemet's membrane can regenerate. Corneal transparency is maintained by the lattice arrangement of the collagen fibrils. ये भी डिस्कस कर लिया. The Descemet's membrane contains type 4 collagen, whereas the stroma it contains type 1 collagen. True regarding cornea. The Descemet's membrane is the basement membrane of the endothelium. इस पर भी हमने काफी दफा स्ट्रेस कर लिया. जो epithelium की basement membrane है वो अलग है, which is attached to the Bowman's layer, whereas the Descemet's membrane is the basement membrane of the endothelium. Regarding the endothelium, corneal transparency is maintained by the endothelial pump. Endothelial pump का भी हमने डिस्कस कर लिया. उस पंप का काम ही है कि वो cornea को dehydrated रखता है. Corneal transparency is maintained by intact endothelium. Corneal source of energy pathway is glycolysis. ये हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन you can remember it from here. The source of energy pathway in cornea is glycolysis. The source of oxygen for cornea in a 1-year-old child is atmosphere. This is always going to be the best answer for regarding oxygen. Fuchs dystrophy occurs in endothelium. Endothelium जब कम disease ही ऐसी है जिसके अंदर endothelium affect होती है. Regarding cornea, it has 523 to 530 microns, about 0.5 millimeters. We discussed this in general considerations. The corneal detergescence. Okay, so you can make a correction over here. This is not detergency, it is detergescence. और detergescence का मतलब यही होता है dehydration की status maintain रखना. Is by not by tear film. Please make a correction. It's by the endothelium or the endothelial pump. The epithelium. It consists of stratified squamous non-keratinized. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. And corneal edema results when there is injury to the endothelium, as we discussed it repeatedly. So this was all regarding the cornea. If you guys have any questions, you can ask. And please also to give a review regarding the lecture. I hope आपको सब चीजें clear हो गई होंगी. Okay. So these are the subjects that we are offering the lectures in. Medicine allied, surgery and allied, diagnostic radiology, gynae, ophthalmology, ENT and dentistry. This is the course format. Discussion of the basic topics, video lectures that will be available throughout the day, live sessions, discussions of the golden files, mock exam, study guidelines, access to private Facebook study group, and one-on-one access to the mentors.
जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी हम इस वीडियो के साथ ही लिंक के अंदर अटैच कर देंगे। एंड दिस इज़ द ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जिसमें यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। अब जिस तरह का हमारा ये लेक्चर था, आई ट्राइड के तकरीबन इस तरह के ही ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स हैं ऑफ्थल्मोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें ऑलमोस्ट सारी एनाटमी, सारे मेजर फिजियोलॉजी के टॉपिक्स, सारे इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजी के टॉपिक्स दे आर कवर्ड। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बुक से ही देखनी होती हैं, तो वो आपको आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से और कितनी एक्सटेंट तक पढ़नी है। तो बिकॉज दैट इज़ द मेन की इन FCPS पार्ट 1 एग्जाम कि वी जस्ट डोंट हैव टू ओवर डू थिंग्स। कुछ चीज़ें हमें सुपरफिशियली आनी चाहिए इतनी के फॉर द एग्जाम पर्पज, कुछ चीज़ें हमें इन डेप्थ पता होनी चाहिए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो साथ साथ बताता जाऊँ। These are some of the other books that have been written by Dr. Ahmed Hassan. Thank you very much. If you have any question, आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दीजिएगा. Inshallah, I'll try my best to answer them. मुझे आ गया एक सेकंड।